हेलो 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 कैसन बा लोग आ रहे हैं अभी सो लेट द पीपल ज्वाइन एंड देन आई विल स्टार्ट कैसे हो आप लोग हाउ यू गाइज आर डूइंग हेलो लतेश हेलो विकास बढ़िया 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 बहुत सही हेलो सौरभ हेलो 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 कसे आहात मी मजेत आहे गुड मॉर्निंग मोहित गुड मॉर्निंग हेलो स्मृति I'm good. Let the people come. Hello 2.0. Hello. Good morning. Hello sir, Bagunnara. This is Kannada. डिसलाइक वाले भी आते होंगे हाँ वो एक्चुअली नेचर में बैलेंस बनाने के लिए आते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि 100% एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है ना सो बिकॉज 100% एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन इज नॉट पॉसिबल सो दे जस्ट come to make second law feasible. I study from your book GATE in 75 days. That's great, Paras. पोएम हो जाए अरे यार डेली मैं डायरी निकालना भूल जाता हूँ और मेरी जो एग्जिस्टिंग पोएम्स मुझे याद हैं वो मैं कई बार सुना चुका हूँ चलो स्टार्ट करते हैं इस सफ़र को टू प्रोटेक्ट लॉज ऑफ नेचर एग्जैक्टली सो दे आर एक्चुअली ग्रेट ह्यूमन बींग्स who come to dislike so that 100% efficiency is not there and second law is satisfied the nature and the laws are protected nature और उसके नियम protect रहें come on people come on join in चलो लीड गेट पे एक बार फिर से आपका स्वागत है दिस इज मी मारुत तिवारी आई हैव डन माय मास्टर्स फ्रॉम IIT खड़गपुर एंड 8 years of experience in GATE and ESE teaching. Multiple times I have cracked GATE and I'm proud author of the book GATE in 75 days. If you have not followed me on Unacademy yet, do follow. 25 million watch minutes in just 1 year. That's something that I would never forget. That's something that I can only express my gratitude to my students ki this love has been unprecedented this love has been something that which is much more than what I deserve मैं जितना डिजर्व करता हूं उससे भी ज्यादा प्यार आपने दिया है उससे 100 गुना ज्यादा प्यार आपने दिया है जो प्लस पे नहीं है आ जाओ आपको बहुत मजा आने वाला है पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग को आप जबरदस्त तरीके से सीखने वाले हो स्टार्ट करते हैं हमारे इस सफ़र को फिर से एक बार और आपको पता है कि आपको पता है कि मैंने बात की थी कि भैया जब आप बात करते हो मोबिलिटी 1 की व्हेन यू टॉक अबाउट मोबिलिटी 1 देन मोबिलिटी इज इक्वल टू 1 इज अ ब्यूटीफुल थिंग मोबिलिटी इज इक्वल टू 1 इज अ ब्यूटीफुल थिंग बिकॉज इट implies that only one parameter needs to be independently specified all other motion parameters can be determined mathematically. तो mobility is equal to 1 is a beautiful thing क्योंकि mobility 1 का मतलब सिर्फ एक motion independent होगी पूरे mechanism में. In entire mechanism only one motion will be independent. All other motions are going to depend on that one independent motion. बाकी सारी motions उस एक independent motion पे depend करेंगे. All right. उस एक independent motion पे depend करेंगे. बाकी सारी motions आप determine कर सकते हो. All right. So हमने m को 1 रख दिया with only lower pairs possibility. With only lower pairs possibility, once you put m is equal to 1, then you get 3n minus 2j is equal to 4. इसमें भी n is equal to 2, j is equal to 1 is possible,
but they are not going to represent a closed kinematic chain. I mean, दो लिंक से आप closed kinematic chain एक loop नहीं बना सकते. दो लिंक यूज करके, दो लिंक with one joint, you can make mechanisms. These are the mechanisms. क्यों? क्योंकि by holding one you can perform useful motion. By holding one link you can perform useful motion. But you cannot make a loop. You cannot make a closed kinematic chain using n is equal to 2. Using n is equal to 2 and j is equal to 1. My dear friends, the next interesting possibility has been the basis of n is equal to 4 and j is equal to 4, has been the basis of so many mechanisms. So n is equal to 4 and j is equal to 4 has been the basis of so many practical mechanisms. Out of n is equal to 4 and j is equal to 4, एक possibility है कि चारों links को आप revolute connections दे दो. Explore किया हमने 4-bar chain. We explored 4-bar chain in great detail. In great detail. Then, my dear friends, another possibility is that 4 number of links are there. 4 link हैं हमारे पास. 3 R connections दे दो और 1 prismatic connection दे दो. Give 3 revolute connections and 1 prismatic connection. That results into slider crank chain. We have explored not only the conventional slider crank chain, inversion number 1, inversion number 2, inversion number 3, inversion number 3, and then Whitworth, then Whitworth, which is the inversion number 4. But we have also explored, other than these 4 possibilities, we have explored that one possibility where R becomes greater, then it becomes crank and slotted lever quick return motion mechanism. तब ये बन जाता है crank and slotted lever quick return motion mechanism. एक और possibility हमने last में explore की, जब E becomes non-zero. When eccentricity becomes non-zero, we call it offset slider crank chain. There is one interesting difference between offset slider crank chain and inline slider crank chain. ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो. We have learned 4 type of quick return motion mechanisms till now. Great. Yes. Can you name those 4 type of quick return motion mechanisms? आप अभी तक 4 तरह की क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म्स पढ़ चुके हो. आप उनका नामकरण कर सकते हो क्या? चलो लिखो सभी लोग जल्दी से. Do write all 4 type of quick return motion mechanisms that you have learned. चलो आप जानते हो, एक है ड्रैग लिंक, दूसरा है विटवर्थ, तीसरा है क्रैंक एंड स्लॉटेड, चौथा है ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म. Now, there is an interesting difference between inline and slider crank, offset. Inline और offset में एक interesting difference है जो मैं चाहता हूं कि आप explore करो. तो explore करते हैं इसको. Inline के केस में we are going to have the reciprocating block. The reciprocating block का line of stroke पे ही crank का center होगा. The center of the crank is going to be at the line of stroke of the reciprocating slider block. This is what you call by the name inline. This is what you call by the name inline slider crank chain. Inline slider crank chain. And then we have, ध्यान से समझियो again, इस बार आएगा ये. This time it's going to be there in your gate paper. Then you are going to have another possibility, and that another possibility is when the stroke, the line of stroke of the slider block and the crank center, they will not be coinciding anymore. The line of stroke of the slider block will not be passing through the crank center. Okay? ये crank center से pass नहीं कर रहा होगा. इसे हम कहते हैं offset slider crank chain. This we call by the name offset slider crank chain. Cool. One thing that we are largely interested is the stroke length.
is the stroke length. My dear friends, you know that the crank is rotating full circle here as well, and you know that the crank is rotating full circle here as well. You know that the crank is rotating full circle here as well. तो दोनों जगह पर crank, which is the छोटू link, is rotating the full circle. Cool. Stroke length decide करने के लिए we are going to decide the stroke length, my dear friends, we are going to take the extreme position. Extreme position क्या होगा? Extreme position वो होगा जब crank और connecting rod इतनी दूर हो जाएं आपस में कि उससे दूर नहीं जा सके. Crank और connecting rod इतनी दूर हो जाएं कि उससे दूर फिर जा ना सकें. That they should not be able to go farther away from there. Alright, so crank and connecting rod, crank must become like this and connecting rod must become like this. Connecting rod must become like this. Alright, this is R and this is L. This is R and this is L, and the O point has come. The O point has come to O1. Q is anyway a fixed center. And the A point has come to A1. इससे दूर जा सकते हैं क्या ये दोनों? Can the crank and connecting rod go away from each other farther from this position? No. इसके बाद crank rotate करेगा, अगर इसके बाद crank rotate करेगा तो connecting rod को इधर ही आना होगा लौट के. After this, if the crank is going to rotate, then the connecting rod will have to return back. यहां से अगर crank rotate करेगा तो connecting rod को वापस आना होगा. तो ये है एक extreme position. This is one extreme position. Another extreme position, my dear friends, is going to be when the crank and connecting rod will again become collinear. When the crank and connecting rod will again become collinear. जब crank और connecting rod फिर से collinear हो जाएंगे, L length, उससे दूर नहीं जा सकते वो. Once again, they cannot go beyond that position. So when the connecting rod and crank, they will once again be collinear but interfering with each other. This will be one extreme position of the slider block, and this will be another extreme position of the slider block. Cool. मुझे चाहिए कि A1 से A2 के बीच में इसने कितना distance travel किया. This is what I know by the name stroke length. This is what we know by the name stroke length. This is the stroke length. Slider is covering these two extreme positions, the length between these two extreme positions, and that is nothing but stroke length. कैसे decide कर सकते हो stroke length? बहुत आसान है, ध्यान से समझियो. You can very clearly see कि अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ L plus R, then it is equal to S plus L, isn't it? If I take L plus R, then it is equal to S plus L. है या नहीं है? It is equal to S plus L. So if we write from here, we can write L plus R is equal to S plus, this is nothing but OA, and OA is nothing but connecting rod ka length. OA is nothing but connecting rod ka length. So this, my dear friends, is L again. So I can very clearly write from here, that L plus R is equal to S plus L. L ने L को मार दिया, and we get S is equal to 2R. आज के बाद से याद रखना that inline slider crank chain में stroke length will always be equal to 2 times the length of the crank.
In case of inline slider crank chain, my dear friends, the stroke length will be equal to 2 times the slider, 2 times the length of the crank. Cool? अब जरा एक्सप्लोर करते हैं कि ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक चेन में. नाउ लेट अस एक्सप्लोर दैट इन केस ऑफ ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक चेन व्हाट इज द स्ट्रोक लेंथ. वहां भी एक्सट्रीम पोजीशंस बनानी पड़ेंगी एंड लकीली वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट एक्सट्रीम पोजीशंस. लकीली हम पहले ही एक्सट्रीम पोजीशंस के बारे में सीख चुके हैं. वन एक्सट्रीम पोजीशन इज गोइंग टू बी दिस, वन एक्सट्रीम पोजीशन इज going to be this black one. One extreme position is going to be this black one. This is a revolute joint, this is a revolute joint. And another extreme position will once again correspond to, connecting rod and crank both coinciding with each other and becoming collinear. So my dear friends, दूसरी extreme position जो है वो कुछ ऐसी होगी. Naturally, these two extreme positions के बीच में जितना travel कर रहा है slider, that is the stroke length. That is the stroke length. How can you decide this? Very easy. How can you decide this? Very easy. Super easy. This is super easy. This position was marked as A1 and this position was marked as A2. This position was marked as A2. So S is very clearly equal to A1 A2, and then A1 A2 can be written as A1B minus A2B. Then this can be written as A1B minus A2B, and then A1B can be written as, ध्यान से समझियो, A1B can be written as E and L plus R. E and L plus R से आप A1B कैलकुलेट कर सकते हो. A1B is actually the base of the triangle A1BQ. A1B is actually the base of the triangle A1BQ. So A1B can be written as, ध्यान से समझियो, I'm talking about this black length that I'm marking right now. And you know the hypotenuse is L plus R and perpendicular is E. Hypotenuse is L plus R and perpendicular is E. So I'm going to write L plus R square minus E square. L plus R square minus E square under square root. How can you write A to B? आप A to B को कैसे लिख सकते हो? How can you write A to B? Now you focus at A to B, guys. Now you focus at A to B and focus at this triangle. Focus at A to B and focus at this triangle, please. This triangle, please. So this triangle में A to B can be written as L minus R. This is L minus R. This is L and then R इधर है. तो L minus R is this and L minus R is this and E is this. This is L minus R A2 से लेकर Q तक. From A2 to Q is L minus R and this is E. Okay. So L minus R and E से आप decide कर सकते हो this another one, this another one. Cool. And minus sign, I'm very sorry. Here we have the minus sign. Simple enough. अगर आपको L, R और eccentricity given है तो आप यहाँ भी stroke length decide कर सकते हो. Then you can decide and you can calculate the stroke length. Stroke length is going to be, stroke length in case of offset slider crank chain is going to be L plus R whole square minus E square, L plus R whole square minus E square, and then minus this particular thing, L minus R whole square minus E square. This is how you can decide the stroke length in case of offset slider crank chain. Offset slider crank chain के केस में इस तरह से आप कर सकते हो. एक इंटरेस्टिंग बात जो आपको समझनी है वो ये, ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो. Please be very attentive and try understanding. Please be very attentive and try understanding. My dear friends, in this triangle A1, A2, Q, in the triangle A1,
A2Q। मैंने आपको बताया था कि ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है दैट द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी मोर देन द थर्ड साइड। The sum of two sides is always going to be more than the third side. Any triangle out there. And the sum of two sides will always be more than the length of the third side. दो sides का sum हमेशा तीसरे side के sum से ज़्यादा होगा. So A1, A2 is one side and A2Q is another side. Focus at the triangle A1, A2Q. Focus at the triangle A1, A2Q. Then S plus A2Q क्या है? A2Q है L minus R. A2Q is nothing but L minus R. And the sum of two sides will be greater than the third side, the black one. The third side, the black one, L plus R. The third side, the black one, L plus R. L ने L को मार दिया और मेरे पास है S greater than 2R. ये ध्यान रखना कि ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक चेन में स्ट्रोक लेंथ इज ऑलवेज गोइंग टू बी मोर देन 2R. Stroke length is going to be more than 2R in case of offset slider crank chain. Cool? I hope you understand this. मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ रहे होंगे. क्लियर है. चलो अभी बात करते हैं तीसरी पॉसिबिलिटी की. Now let us talk about the third possibility, and the third possibility is going to be, you see, m is equal to 3n minus 1 minus 2j if there are lower pairs only. With lower pairs only, we call it linkage. Linkage मतलब mechanism with only lower pairs. Linkage means mechanism with only lower pairs. And then we said if m is equal to 1, why are we interested in m is equal to 1? Because m is equal to 1 means that we have only one independent motion, and only one independent motion means that all other motions can be fixed just by fixing one motion. Just by fixing one independent parameter, मेरे प्यारे दोस्तों, बाकी सारी मोशंस को आप फिक्स कर सकते हो. So we get 3n minus 3 minus 2j. We get from here 3n minus 2j. 3n minus 2j is equal to 4. क्योंकि लोगों ने बोला कि क्योंकि हमें ज्वाइंट्स तो हमेशा इंटीजर चाहिए, ज्वाइंट्स वी नीड ऑलवेज इंटीजर, सो वी आर गोइंग टू गेट 3 by 4n. j is equal to 2j is equal to 3n minus 4. I'm very sorry. 2j is equal to 3n minus 4. So j is equal to 3 by 2n minus 2. तो j के इंटीजर होने के लिए, for j to be integer, ये सब सिखा चुका हूं मैं आपको. I'm just doing a recapitulation. For j to be integer, n must be even. n must be even number. क्योंकि even number होगा तो 2 से कैंसिल हो जाएगा तभी. अगर 3 लेते हो तो 9 divided by 2 आ जाएगा and that will become decimal. Okay? So इसमें एक possibility हमारे पास है n is equal to 4. One possibility is n is equal to 4. So if you put n is equal to 4, then j value will become 3 by 2 multiplied by 4 minus 2, which is 6 minus 2, which is 4. So one practically very fascinating possibility is n is equal to 4 and j is equal to 4. n is equal to 4 and j is equal to 4 में हमारे पास 3 possibilities हैं. In n is equal to 4 and j is equal to 4, we have 3 possibilities. One possibility is
that all of them will be connected through revolute connections. Another possibility is that one revolute connection will be there, another revolute connection will be there, yet another revolute connection will be there, but एक prismatic connection होगा. There will be one prismatic connection. Okay, there will be one prismatic connection. And then अब हम जिस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने वाले हैं, दैट इज एक रिवोल्यूट कनेक्शन, दूसरा रिवोल्यूट कनेक्शन. देयर इज वन रिवोल्यूट कनेक्शन एंड देयर इज अनदर रिवोल्यूट कनेक्शन, एंड देन वी विल बी हैविंग वन प्रिज्मेटिक कनेक्शन एंड वन मोर प्रिज्मेटिक कनेक्शन, one prismatic connection and one more prismatic connection. So we have revolute, 4R chain, revolute, 3R and 1P, 3R and 1P, and here we have R and R, R and R, and P and P. So we have 2R, 2P possibility. We have 2R, 2P possibility, and that 2R, 2P possibility is known by the name double slider crank chain. The 2R, 2P possibility is known by the name double slider crank chain. I suppose this is going to be the sixth and the last topic of the chapter. ये होगा छठा और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का. तो अब हम ऑफिशियली 3 लेक्चर से, मतलब लगभग 4 घंटे से पीछे हो चुके हैं. वी आर नाउ लैगिंग बाई 4 hours अराउंड. ओके, बट द गुड न्यूज इज दैट द सेम अमाउंट ऑफ सिलेबस इन अर्लियर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स वी कवर्ड इन 30 hours. दैट वी हैव कवर्ड हेयर इन 8 तक हो चुका है, 9 and 10. इन 10 into 1.5, roughly 16 hours. 10 लेक्चर और 1.5 घंटे. तो जो हमने 30 घंटे में कवर किया था प्लस पर जो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स था उसमें, वो हमने यहां पर 16-17 घंटे में कवर किया. दैट वी कवर्ड इन 16-17. एंड बाय द वे, आई हैव नॉट कट एनीथिंग. नॉट इवन अ स्लाइटेस्ट पॉसिबिलिटी आई हैव कट. ओके, कोई भी एक छोटी सी पॉसिबिलिटी भी मैंने कट नहीं की कहीं भी. एवरीथिंग आई एम कवरिंग. सो माय डियर फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू फोकस एट 2R, 2P chain, 2R, 2P chain, and that 2R, 2P chain is also known by the name double slider crank chain. That 2R, 2P chain is also known by the name double slider crank chain. Okay, double slider crank chain के केस में एक तरीका तो ये possible है. One way, basic mechanism is going to look like this. Basic setup is going to be this, that you have 2 revolute connections and you have 2 prismatic connections. You have 2 revolute connections, and you have 2 prismatic connections. This is one prismatic connection and this is another prismatic connection. Now once again by fixing different links, आपको different inversions मिलेंगे. By fixing different links, you will be getting different inversions. At the very first of all, माय डियर फ्रेंड्स, मैं लिंक्स की नेमिंग कर देता हूं और उस नेम के हिसाब से ही मैं फिक्स करूंगा. सो दिस इज लिंक नंबर 1, एंड देन वी हैव दिस लिंक नंबर 2 which is the slider block. Then we have link number 3 which is the connecting link, and then we have link number 4 which is another slider block. Okay, so first of all I'm fixing the link number 1. लिंक नंबर 1. सबसे पहले मैं लिंक नंबर 1 को फिक्स कर रहा हूं. सो व्हेन आई एम फिक्सिंग द लिंक नंबर 1, देन जो रिवोल्यूट कनेक्शंस हैं वो फ्री हैं. व्हेन आई एम फिक्सिंग द लिंक नंबर 1, देन दोज रिवोल्यूट कनेक्शंस कैन नेवर बिकम द फिक्स्ड सेंटर्स ऑफ रोटेशन.
When I'm fixing the link number 1, then those revolute connections से जुड़ा हुआ कोई भी बॉडी आपने फिक्स किया क्या? रिवोल्यूट कनेक्शन पे 2 और 3 कनेक्टेड हैं, आपने ना तो 2 को फिक्स किया ना 3 को फिक्स किया. रिवोल्यूट कनेक्शन पे 3 और 4 कनेक्टेड हैं, आपने ना तो 3 को फिक्स किया ना 4 को फिक्स किया. तो कोई भी रिवोल्यूट कनेक्शन फिक्स्ड सेंटर बनेगा क्या? Is there any revolute connection going to become fixed center? No. That means revolute connections will keep moving in space. Revolute connections can never become the fixed center unless you fix 4, 3 or 2. जब तक 2, 3, 4 में किसी एक को फिक्स ना करो, तब तक कोई भी revolute connection fixed center नहीं बन सकता. All right. तो अगर मैं लिंक नंबर 1 को फिक्स करूं और थोड़ा सा इसको मैं एक नया रूप दूं, if I give this a little different appearance, if I give this a little different appearance like this is the link number 1 that is slotted. This is the link number 1 that is slotted and I'm fixing it. This is the link number 1 जिसको हम फिक्स करने वाले हैं, ये पूरा स्लॉट है एक, ये पूरा स्लॉट है एक. अब आप जरा विजुअलाइज करो. देखो, जब तक विजुअलाइज नहीं करोगे आप कुछ नहीं समझ सकते. Unless you are going to visualize, you will not be able to understand that what is the motion that is possible. What is the motion that is possible? This is one slider block and this is another slider block. Let me change the color so that color के हिसाब से ही मैं बताऊं. Let me change the color. So I have this red slider block and I have this green slider block, and both of them are being connected with this. Both of them are being connected with this purple link. Okay. Now you visualize this green block. Arey, ladder is the best thing to visualize the things. एक ladder को आप floor और wall के against रख दो. Keep a ladder against a floor, horizontal floor, and against a vertical wall, and then move the lower end of the ladder to the positive x direction. एक सीढ़ी को आप फर्श और दीवार के सहारे रख दो और सीढ़ी के निचले बिंदु को धनात्मक x अक्ष के तहत मूव करो. ओके, तहत गतिमान करो. So keep that ladder moving in the positive x direction. So अगर आप इसको positive x direction में move करोगे, notice that when this green block will come here, at this extreme position, when this green block will come to this extreme position, then at that time this red block must have come to this position. This red block must have come to this position, and that purple link must have become flat. सीढ़ी पूरी गिर गई. और सपोज जो दीवार है वो पाताल लोक में भी है. सपोज द दीवार इज इन पाताल लोक एज वेल. तो सीढ़ी अभी ऐसे जो रखी थी अब वो नीचे जाने लगेगी. that ladder will go downward. As that सीढ़ी will go downward, my dear friends, there is going to be one position like this. The slider will go in vertical slot, and the crank, after becoming horizontal, it's not crank, I'm sorry, crank हमेशा fixed center होना चाहिए crank के लिए. For a crank, fixed center of rotation must be there. So this connecting link, this purple link will now become, my dear friends, will now become like this. So this, अब ये वाला red block नीचे जा रहा होगा और green block वापस आ रहा होगा. The green block must be coming back. And that purple link must have become like this. And then that green block is going to say कि तुम कभी यहाँ से पास हुए थे और मैं दूर था. अब तुम सबसे दूर हो और मैं यहाँ से पास हो रहा हूँ. That green block is going to say that, dear red block, you are at the extreme position and I'm passing through here. As I'm passing through here, that connecting link has become vertical.
That connecting link has become vertical, and then, my dear friends, the green block will continue its journey to the left side of the slot. That green block will continue its journey to the left side of the block, to the left side of the block. The red block will be pulled upward. The red block will be pulled upward, and the purple link must have become like this. एक समय ऐसा आएगा जब ग्रीन ब्लॉक इधर एक्सट्रीम पर जा चुका होगा और रेड ब्लॉक फिर से मिड पर आ चुका होगा. One time will come when the green block must have gone to the green block must have gone to the green block must have gone to the extreme position, and the red block must have come to the mid. Okay. The red block must have come to the mid, and the purple link will become horizontal again. And then, my dear friends, red block will start upward journey, and the green block will start backward journey. The red block will start upward journey, and the green block will start backward journey. The green block will start backward journey, and the purple link will be dragged like this. Purple link will be dragged like this. Cool. मेरे प्यारे दोस्तों, as the green block moves between positions A1 to positions A2, the red block moves between positions B1 to position, जब वो A1 पर है तो ग्रीन ब्लॉक मिडिल पे होगा. जब ग्रीन ब्लॉक यहां है तो रेड ब्लॉक मिडिल पर होगा. ओके, सो प्लीज ट्राई अंडरस्टैंडिंग. जब तक आप विजुअलाइज नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता. अनलेस यू विल बी विजुअलाइजिंग द थिंग्स, यू कैन नॉट. लैडर इज द बेस्ट थिंग टू विजुअलाइज. सीढ़ी बेस्ट थिंग है. ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड्स, देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर that this is having. There is a very interesting feature that this mechanism is having. And what is that interesting feature? Focus yourselves here and try understanding. बहुत ध्यान से समझियो. This is the slotted link. This is the slotted link we got here. And then, my dear friends, we have got the block, and we have got the another block. Both of them being connected through a connecting link. Okay, ये linear motion है. This A is doing linear motion. I hope you agree. This A is doing linear motion. A is doing linear motion. A is doing linear motion. B is also doing linear motion. But very interestingly, any point on the connecting link, my dear friends, any point on the connecting link, इसको मैं B कह देता हूँ, इसको A कह देता हूँ, इसको मैं B कह देता हूँ और इसको A कह देता हूँ. यहाँ भी चेंज कर लो. Here also you change it. हॉरिजॉन्टल स्लॉट में जो मूव कर रहा है उसको मैं B कह रहा हूँ, और वर्टिकल स्लॉट में जो मूव कर रहा है that is the block A. My dear friends, suppose there is a point P which is available at a distance from this slider block, and which is available at B distance from this slider block. So basically that point P is on the connecting link. That point P is a point on the connecting link, that point P is a point on the connecting link at A and B distance. From
block A and B respectively. From block A and B respectively. ब्लॉक ए और बी से एक पॉइंट मैंने ऐसे ही एक पॉइंट मार्क कर लिया कनेक्टिंग लिंक पर. आई जस्ट मार्क्ड अ पॉइंट ऑन द कनेक्टिंग लिंक, a random point on the connecting link which is at A distance from one block, at B distance from another block. Now, right now its position can be specified. Right now its position can be specified with respect to this XY system. Right now its position can be specified with respect to this XY system as right now its position can be specified with respect to this XY system by this X coordinate and by this Y coordinate, by this X and Y coordinate, है ना. तो पॉइंट P की पोजीशन को हम X और Y से मार्क कर सकते हैं. We can mark the position, instantaneous position of point P by X and Y. Now suppose this, ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो. My dear friends, I have taken a point P which is at A distance from one block and which is at B distance from another block, and this is X and this distance, vertical distance, is Y, which basically describes the instantaneous position of that point P, जो उसकी instantaneous position को describe कर रहा है. मैं मान लेता हूँ instantaneous angle is theta. Let me assume that this instantaneous angle is theta. Then we can very clearly write y divided by b is equal to sine theta. We can very clearly write y divided by b is equal to sine theta. And if this angle is theta, then this angle is also going to be theta. And we can write x divided by a as cos theta. Agree or not? X divided by a we can write as cos theta. So x divided by a को अपन लिख सकते हैं cos theta. Cool. And आज ही के दिन के लिए तो सिखाया गया था आपको. आज ही के दिन के लिए सिखाया गया था कभी आपको that sin square theta plus cos square theta is equal to 1. आज ही के दिन के लिए आपको कभी तो सिखाया गया था that sin square theta plus, let's eliminate this instantaneous angular position, है ना, xy में ही डील करते हैं तो इसको eliminate कर सकते हैं यहाँ से, and then we will be getting x square divided by a square plus y square divided by b square is equal to 1. भाई साहब, ये भी आज ही के दिन के लिए आपको सिखाया गया था. जानते हो आप? बहुत अच्छी बात है. नहीं जानते? आज से जान लो that ये एक ellipse को describe करती हुई equation है. This is an equation describing the ellipse. This is an equation describing the ellipse. My dear friends, something interesting is going on. कुछ तो interesting हो रहा है यहाँ पर. कुछ तो interesting हो रहा है यहाँ पर. ये point P यहाँ है, ये point P यहाँ है, फिर ये point P जब ये हॉरिजॉन्टल हो गया तो ये पॉइंट P यहाँ चला गया. फिर जब ये वापस ऐसे आता है तो ये पॉइंट P यहाँ आ जाता है. फिर ये पॉइंट P यहाँ आ जाता है. फिर ये पॉइंट P, मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये वापस जाता है तो ये पॉइंट P यहाँ आ जाता है. फिर ये पॉइंट P यहाँ आ जाता है. एंड इस तरह से अगर आप इन सारी पोजीशंस को कनेक्ट करोगे, इफ़ यू कनेक्ट ऑल दीज पोजीशंस आउट देयर, that point P is actually tracing an ellipse. That point P is actually tracing an ellipse. वो point P जो है वो एक elliptical path को trace कर रहा है. That point P is tracing an ellipse. So point P एक ellipse को trace कर रहा है जिसकी major axis होगी 2A और minor axis होगी 2B. Point P is tracing an ellipse जिसकी मेजर एक्सिस होगी 2A और माइनर एक्सिस होगी 2B. इस वजह से इस इन्वर्जन को एलिप्टिकल ट्रैमल कहते हैं. ट्रैमल मतलब
ट्रैमल मतलब ट्रेस करना. ट्रैमल is a word derived from tracing or drawing something. ट्रेसिंग और ड्राइंग समथिंग. तो इसकी हेल्प से आप किसी मशीन टूल में इलिप्टिकल पाथ कट कर सकते हो. आप P पॉइंट पे एक टूल अटैच कर दो. You attach a tool at point P and then it will follow an elliptical path. So if it is a milling cutter, let's say, attached at point P, then it will be following an elliptical path. All right. So my dear friends, profile cutting वगैरह में इसको use कर सकते हो. This inversion for this reason is known by the name elliptical trammel. Elliptical trammel because it traces ellipse. क्योंकि ये ellipse trace करता है. Visualize करो और उस ellipse को बनाने की कोशिश करो. Please do visualize and try making that ellipse out of it. Try making that ellipse out of it. This is one vertical slot and then we have got the horizontal slot. चलो मैं एक काम करता हूँ, लैडर पे ही आपको दिखाता हूँ. एक क्वार्टर ऑफ एलिप्स दिखेगा और फिर उसको हम लैडर पे ही दिखाता हूं आपको मैं. We will see a quarter of ellipse. This is a ladder. This is a ladder. And then my dear friends, let's say right now this point is here. Right now this point is here. Okay? So right now this point is here. Then you try observing one more position of the ladder. उसके बाद आप लैडर की एक और पोजीशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो. एंड ये तो एक पोजीशन हो गई, फिर आप दूसरी पोजीशन आइडेंटिफाई करो. नेचुरली ये पॉइंट यहाँ आ चुका होगा. अब आप तीसरी पोजीशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो. नाउ यू ट्राई आइडेंटिफाइंग द थर्ड पोजीशन. Naturally this much distance you'll have to take. So ये point अभी आ चुका होगा यहाँ. All right. Then you try taking the fourth position and that fourth position is going to be like this. अब ये point यहाँ आ चुका होगा. And then my dear friends, you try taking, ये ध्यान रखना मैंने A और B को इंटरचेंज कर दिया है. अब ये वाला मेजर डिसाइड करेगा और ये वाला माइनर डिसाइड करेगा. ओके, सो देन यू ट्राई टेकिंग वन मोर पोजीशन एंड दैट वन मोर पोजीशन इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस एंड दिस पॉइंट मस्ट हैव कम हियर. ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स. और अगर ऊपर की पोजीशन और बनाओगे, इफ यू मेक अ पोजीशन एट अपर लेवल, देन दिस पॉइंट मस्ट हैव बीन हियर. Then my dear friends, you can very clearly see that if I connect all these points together, then it is going to be an elliptical thing. But of course, इस बार ये vertical ellipse इसलिए है क्योंकि midpoint के ऊपर मैंने point select किया. I have selected a point above the midpoint. All right. So guys, this is how you can trace the ellipse out of it. मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैंने पिछले कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में भी सजेस्ट किया था ये, कि आप एक काम करो, आप एक स्केल उठाओ, पेन और पेपर उठाओ. टेक अ पेन, पेपर एंड स्केल and then just draw as many positions as you can and try connecting them. Just draw as many positions as you can of fixed length of link number 3. Fixed length of link number 3 के साथ जितनी positions बना सकते हो बनाते रहो, और वो सारी की सारी positions बनाओगे तो आपको कहीं ना कहीं वो ellipse trace करता हुआ दिखेगा. एक बार और आप समझ लो, just in case अगर कोई confusion है तो, if there is any confusion, please try understanding. Once again, we have one end A and we have another end B. ऊपर वाला A था, नीचे वाला B था, और यहाँ हमारा पॉइंट है. पॉइंट जो है उसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ. ठीक है, पॉइंट को रेड से मार्क कर रहा हूँ. सो दिस इज द पोजीशन ऑफ द पॉइंट. This is the position of the point and this is the initial position of B and A and initial position of P. Then as A comes here, this is one possible position. And initial position,
this red point P is here. Okay, then as this slider block moves to the right and this slider block moves to the down, then this is going to be the next position. And इतनी ही लेंथ पे फिर से पॉइंट मार्क करो, इतनी ही लेंथ पे ये ए जो लेंथ है, इसी ए लेंथ पे फिर से पॉइंट मार्क करो. Mark a point once again. And then, my dear friends, take one more position. Take one more position when this slider block will come here and this slider block will go there. This slider block will come here and this slider block will go there. And once again, take this A distance. Take this A distance and mark that point P. And mark that point P. Okay? Take this A distance and mark the point P. एंड देन माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हो सीधे सीधे कि ये ए डिस्टेंस सेमी मेजर एक्सिस बन चुका है. ये ए डिस्टेंस सेमी मेजर एक्सिस बन चुका है. एंड दिस इज द इलिप्टिकल पाथ बीइंग ट्रेस्ड आउट. दिस इज द इलिप्टिकल पाथ बीइंग ट्रेस्ड आउट. अब अगर आप समझ सकते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ सकते यू आर इन रॉन्ग ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग. अभी भी नहीं समझ में आया, यू आर इन अ रॉन्ग ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग. ये याद रखना कि मिड पॉइंट जो है दोस्त, वो मिड पॉइंट एलिप्स को ट्रेस नहीं करेगा, वो मिड पॉइंट सर्कल को ट्रेस करेगा. द मिड पॉइंट विल बी ट्रेसिंग द सर्कल. व्हाई द मिड पॉइंट विल बी ट्रेसिंग द सर्कल? क्योंकि ellipse with same major and minor axis is the circle. Circle is just an special case of the ellipse with equal major axis and minor axis. So if A becomes equal to L by 2 and B becomes equal to L by 2, then you will be getting x square divided by A square and y square divided by B square. Y square divided by B square is equal to 1, and this will give you x square plus y square is equal to L square divided by 16. Midpoint of link number 3 will trace the circle. Midpoint of link 3 traces the circle of radius L by 4. L by 2 का स्क्वायर. क्या ही कर रहे हो तिवारी जी आप? भूख लगी है क्या? हाँ, लग तो रहा है. L by 2, L square by 4. Okay. Interesting. Endpoints move linear. Midpoint moves circle. All other points move ellipse. Interesting. Linear motion, circular motion और general curvilinear translation सब कुछ है यहाँ पर. A is moving linear, B is moving linear. Midpoint is moving on a circular path. Other than that, all other points on link number 3 are moving on an elliptical path. ये ध्यान रखना. Major axis is always going to be 2A and minor axis is always going to be 2B. A is the distance from one slider block. B is the distance from another slider block. इसमें एक possibility और होगी दोस्त. And that possibility is going to be something like this. इसमें एक possibility और होगी और वो possibility कुछ इस तरह आप इमेजिन करने वाले हो. अभी ये पहला इन्वर्जन ही चल रहा है, ये ध्यान रखना. दिस इज द फर्स्ट इन्वर्जन गोइंग ऑन. सो माय डियर फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू हैव दिस स्लाइडर ब्लॉक एंड वी आर गोइंग टू हैव दिस स्लाइडर ब्लॉक एंड बोथ ऑफ देम हैव बीन कनेक्टेड विद दिस लिंक. सपोज इस लिंक को मैंने एक्सटेंड कर दिया. अगर मैंने इसे एक्सटेंड कर दिया, ध्यान से समझियो, मैंने इसे एक्सटेंड कर दिया तो अब A से पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो ये हो जाएगी
और B से पॉइंट P की डिस्टेंस ये हो जाएगी। अब आप जरा देखो हॉरिजॉन्टल पोजीशन इमेजिन करो। इमेजिन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, एंड इफ यू इमेजिन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, सेंटर से A डिस्टेंस पर होगा P। If you imagine the horizontal position, my dear friends, if you imagine the horizontal position, center से A distance पर होगा P. And if you imagine the vertical position, A goes up. If you imagine the vertical position, A goes up, then my dear friends, if you imagine the vertical extreme, when A goes up, then P will come here and slider block B will come here. A2 and slider block B will come here and P will come here. And this is going to be equal to B. This is going to be equal to small b. Okay? And my dear friends, एक पोजीशन आपने जो ग्रीन वाली इमेजिन की है, ग्रीन वाली पोजीशन में ये A है और ये B है, सॉरी ये A है और ये B है. This is B and this is P. Once again, you can very clearly see that we have an elliptical path. Major axis is twice of the distance. Major axis is twice of the distance of the point from one slider block. Minor axis is twice of the distance. Major axis is very clearly A1 to P1 distance multiplied by 2, and minor axis is very clearly B2 to P2 distance multiplied by 2, which is 2B. ये था स्लाइडर क्रैंक चेन का, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन का पहला इन्वर्जन. This was the first inversion of double slider crank chain. Now let me take you to the inversion number 2. And the inversion number 2 is अभी तक आपने opposite link को फिक्स किया था. अगर मैं इसको shortest link मान लूं, shortest मतलब rotating link. Okay, so link 3 के opposite link को फिक्स किया था. लिंक 3 का एडजेसेंट लिंक है स्लाइडर ब्लॉक. So we basically fixed opposite link to the link number 3. Opposite to link 3 was fixed. Now let us fix the adjacent link to link number 3. अब ना link 3 का adjacent link fix करते हैं. Adjacent to link 3 is fixed. That means any one slider block. अच्छा, क्योंकि दोनों स्लाइडर ब्लॉक आइडेंटिकल हैं, इसलिए दोनों में से किसी को भी फिक्स करोगे सेम इन्वर्जन मिलेगा. ऑलराइट, दोनों में से किसी को भी फिक्स करोगे सेम इन्वर्जन मिलेगा. सो एनी वन slider block is fixed. If any one slider block is fixed, my dear friends, ध्यान से समझियो, otherwise you'll not be able to understand. बहुत ध्यान से समझियो. If you fix any one slider block, then what is, please visualize. अगर नहीं visualize करोगे नहीं समझ पाओगे. Please do visualize the things. बहुत ध्यान से समझियो, जितना आपके पास जितना कंसंट्रेशन हो सकता है, grab all that concentration and focus yourselves here. किसी एक स्लाइडर ब्लॉक को आपने फिक्स कर दिया. You are fixing any one slider block. Okay?
इस स्लाइडर ब्लॉक को आपने फिक्स कर दिया एंड देन आप बता दो मुझे अब रिवोल्यूट फिक्स सेंटर हो गया या नहीं हो गया? अब रिवोल्यूट फिक्स सेंटर हो गया या नहीं हो गया? नाउ द रिवोल्यूट कनेक्शन नंबर बी हैज बिकम अ फिक्स सेंटर और नॉट? यस. So connecting link 3 can only rotate about it. Connecting link 3 can only rotate about it. Connecting link 3 सिर्फ उसके about, B के about, B has become a fixed center. If slider block B has been fixed, then revolute connection between link number 2, revolute connection between link number 2 and link number 3 has become a fixed center. And forget the slotted link and forget everything else. बाकी सब कुछ भूल जाओ, बाकी सब कुछ भूल जाओ, तो आप इस क्रैंक को, आप इस लिंक नंबर 3 को सिर्फ और सिर्फ रोटेट होते हुए देखोगे. लिंक नंबर 3 को सिर्फ और सिर्फ रोटेट होते हुए देखोगे B के अबाउट. You will see this link number 3 only rotating about B. B के about भाई, B के about. Cool, perfect. And then you know, जहाँ जहाँ A जाएगा, वहाँ वहाँ स्लाइडर ब्लॉक जाएगा. जहाँ जहाँ A जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, A जहाँ जहाँ जाएगा, वहाँ वहाँ स्लाइडर ब्लॉक जाएगा. और जब स्लाइडर ब्लॉक जाएगा, तो अपने साथ साथ स्लॉटेड लिंक को लेकर जाएगा. तो अपने साथ साथ वो स्लॉटेड लिंक को पुश करेगा. एंड व्हेन दैट स्लॉटेड लिंक विल बी पुश्ड, then that slotted link will have no choice but also to slide over the fixed block. I repeat once again, ध्यान से समझियो. I have fixed slider block number 2. स्लाइडर ब्लॉक नंबर 2 को मैंने फिक्स कर दिया है, तो ये B फिक्स सेंटर बन गया. एंड इफ द B becomes fixed center, if the B becomes fixed center, let me just write this quickly. Slider block number 2 is fixed. So B becomes fixed center. B becomes fixed center of rotation. B becomes fixed center of rotation, and therefore link number 3 can only rotate about B. Link number 3 rotates about, link 3 rotates about fixed center. Link 3 rotates about fixed center B. Okay, the black path. As link 3 rotates, as the link 3 rotates, A follows circular path. A follows circular path. A moves on the circular path. A comes here. As A comes here, it actually is a common point between the slotted link. So A जब यहाँ आता है तो A इस slotted link को बोलेगा कि भाई तुम भी यहाँ आ जाओ. A जब यहाँ आएगा तो that slotted link will have to move, क्योंकि A तो slotted link के अंदर है ना. So A moves, then the slotted link is forced to move to the left side. Then the slotted link is forced to move to the left side. And B is actually going to allow it to do this. B is going to say कि मैं फिक्स जरूर हूं, लेकिन मेरा तुम्हारे साथ स्लाइडिंग कनेक्शन है, तो तुम मेरे ऊपर से स्लाइड हो जाओ ना. अरे अभी तक मैं स्लाइड होता रहता था तुम्हारे अंदर, अभी तक मैं स्लाइड होता रहता था तुम्हारे अंदर, तुमने अलाउ किया, तो अब तुम मेरे ऊपर स्लाइड होना चाहते हो, मैं तुम्हें अलाउ करूंगा. B is going to say that no problem dear, you move over me. You move over me. No problem at all dear, you move over me. Okay? And this slotted link will keep moving
this slotted link will keep moving like this. The slotted link will keep moving like this. आप A को multiple positions पे imagine कर सकते हो. A का जब यहाँ पर आएगा, A will come here, then the slotted link must have moved. Then the slotted link must have moved extreme. उसके बाद A यहाँ आएगा, तो slotted link वापस इस black वाली position पर होगा. Slotted link वापस इस black वाली position पर होगा. When A comes here, slotted link will be again at this red position that has been represented. So 3 is rotating full circle and slotted link is reciprocating, and another slider is completing the circle in space. Appearance wise, this is modified a little bit. And let me tell you the modification. But before I tell you that modification, could you please give a thumbs up if you understood this? अगर ये आपको मोशन समझ में आई, give a thumbs up. Butterscotch mechanism. मजा. बहुत सही. पेप्सी, कोका कोला. अच्छा, अब ये नहीं खेल लो. थम्स अप, स्प्राइट, ड्यू, सब कुछ कर लो यहीं. मुझे सिर्फ कोक पसंद है. मिरांडा. अब मिरांडा आता ही नहीं है मुझे लगता है. नहीं, वो टकले कहां चले गए? फ्रूटी बच्चों का ड्रिंक है. मॉकटेल. बैजू, जो लिखना चाहते हो वही लिख दो ना. एम क्यों लिख रहे हो? Limca, one of most favorite drinks out there. Limca का जो ad आता था, that was my caller tune for roughly 2 years. The ad of Limca was my caller tune. All right. Once upon a time, it has been the most favorite soft drink for me. Anyways, इसकी appearance को दोस्त थोड़ा सा change करेंगे. देखो, kinematically it is going to be same, but appearance wise we'll change it a little bit. How will change? ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो. Right now we have this appearance something like this. Okay? अभी हमारे पास ये appearance है जिसमें हमने एक स्लाइडर ब्लॉक को फिक्स कर दिया है. वी हैव मेड द स्लाइडर ब्लॉक फिक्स, एंड एज द स्लाइडर ब्लॉक हैज बीन फिक्स्ड, माय डियर फ्रेंड्स, लिंक नंबर 3 कैन ओनली रोटेट अबाउट इट. लिंक नंबर 3 कैन ओनली रोटेट अबाउट बी. नहीं बना. लिंक नंबर 3 कैन ओनली रोटेट अबाउट बी like this. It can only follow a circular path. A will be here, then A will come here and slotted link will move to the left, then A will come here and slotted link will be moved to the left extreme. Then जब A वापस यहाँ आएगा तो slotted link फिर से यहीं आ चुका होगा. Okay, I'm going to do one little change, and that one little change is, ध्यान से समझियो, I'm going to do one little change, and that one little change is, that is slotted link को ना, इस slotted link को मैं ये part कट कर दूंगा. I'm going to cut this part. I'm just going to delete this part. Okay? ये वाला part मैं delete कर दूंगा, और ये वाला part अगर मैं delete कर दूं, if I delete this part, then I'm going to get
If I delete this part, then I'm going to get something like this. And I'm going to get ये anyways fixed है. ये anyways fixed है भाई. तो this is anyways fixed. तो इसको आप चाहे रेक्टेंगुलर शेप दे दो, चाहे सर्कुलर शेप दे दो, आपकी मर्जी है. आपकी मर्जी है. ये तो पूरी तरह से फिक्स है ना. और इससे रिवोल्यूट कनेक्शन ही देना है. We have to give a revolute connection to this. We have to give a revolute connection to this. Like this, isn't it? Like this, like this, like this. तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने सिर्फ उस स्लॉटेड लिंक को की एक आर्म कट कर दी. I have simply deleted one arm of that slotted link. एक सेकेंड. Okay, but notice that you have actually deleted the connection between link number 1 and link number 2. लिंक नंबर 1 और लिंक नंबर 2 के बीच का कनेक्शन आपने डिलीट कर दिया. गलत बात है भैया. लिंक नंबर 1 was having prismatic connection. लिंक नंबर 1 was having prismatic connection with link number 2. वो कनेक्शन कहाँ गया? Where is that connection? और ऐसे हवा में आप इसको कैसे स्लाइड करा सकते हो भाई? Don't worry. We will make link number 2 hollow. So link number 2, which is now fixed, and link number 1, which was earlier the slotted link, they are still having prismatic connection. इस mechanism को कहते हैं Scotch Yolk mechanism. This mechanism is known by the name Scotch Yolk mechanism. This mechanism is known by the name Scotch Yolk mechanism. This mechanism is known by the name Scotch Yolk mechanism, and it has one interesting property. But before I tell you that interesting property, my dear friends, before I tell you that interesting property, let me just show this to you. एक तो ये पता नहीं कहाँ चला जाता है. मैंने आज ये हाँ, okay, I have it. जो रेड वाला स्लॉटेड लिंक है उसमें एक्चुअली 2 स्लॉट हुआ करते थे, लेकिन उसके एक स्लॉट को मैंने मेंटेन रखा है. दूसरे स्लॉट को ही ब्लॉक बना दिया, और जो स्लाइडर ब्लॉक नंबर बी था उसको मैंने स्लॉट बना दिया. आई डोंट नो वेदर यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. That red one was having horizontal vertical 2 slots. Vertical slot has been maintained, लेकिन उसके हॉरिजॉन्टल स्लॉट को मैंने सॉलिड बना दिया, एंड उसके हॉरिजॉन्टल स्लॉट में ब्लॉक नंबर बी सॉलिड ब्लॉक मूव करता रहता था. अब उस सॉलिड ब्लॉक को मैंने स्लॉटेड बना दिया, तो स्लॉटेड लिंक में ब्लॉक मूव करता था, अब वो ब्लॉक स्लॉटेड लिंक बन गया और स्लॉटेड लिंक का एक आर्म ब्लॉक बन गया. Enjoy this beautiful inversion of double slider crank chain. Enjoy this beautiful inversion of double slider crank chain. मजा आया?
पूरा पहला चैप्टर लगभग कंप्लीट है अब. Now the first chapter is almost completed. Now my dear friends, let me tell you about the interesting feature of this mechanism. इस mechanism के interesting feature के बारे में बताता हूँ आपको मैं. There is one interesting feature of this mechanism that you need to know. एक interesting feature है इस mechanism का जिसके बारे में आपको समझना होगा. जल्दी से बता के wind up करता हूँ क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ. I'm too hungry to tolerate now. क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया ब्रेक के समय. Was busy with certain things. सीधे लंच करना होगा. Now my dear friends, please try understanding that there is only vertical slot that has been maintained. Horizontal slot has been converted into a solid block. Horizontal slot has been converted into a solid block. ऐसा लगता है कि ये दो चीज़ें कनेक्टेड हैं आपस में, बट ऐसा है नहीं. ऐसा लगता है कि ये दो चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं बट ऐसा है नहीं. तो लेट मी मेक इट लाइक दैट. ओके. एंड देन जो ब्लॉक बी हुआ करता था, दिस वाज लिंक नंबर 1 which was actually having one vertical slot and one horizontal slot. बट वर्टिकल स्लॉट को मैंने मेंटेन करके रखा है. हॉरिजॉन्टल स्लॉट को मैंने सॉलिड बना दिया. हॉरिजॉन्टल स्लॉट आई एम मेकिंग अ सॉलिड पोर्शन. एंड द ब्लॉक बी विच वाज अ सॉलिड ब्लॉक, उसको मैंने हॉलो बना दिया. आई मेड इट द हॉलो थिंग. And of course, this is always there. Now my dear friends, ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो. You think about the extreme position. And if you think about the extreme position, any one extreme position, you can think about maybe the vertical extreme position. You can think about the horizontal extreme position. तो आप चाहो तो वर्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन के बारे में सोच सकते हो, आप चाहो तो हॉरिजॉन्टल एक्सट्रीम पोजीशन के बारे में सोच सकते हो. सो लेट्स टेक द वर्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन. बहुत ध्यान से समझियो. प्लीज बी वेरी 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 अटेंटिव. ओके. आप इस रेड लिंक को रोटेट करो जरा. प्लीज रोटेट दिस रेड लिंक अबाउट बी. As this red link is going to rotate about B, ध्यान से समझियो. As this red link, अरे यार ये बन के ही नहीं देगा, हाँ? As this red link is going to rotate about B, जब ये red link यहाँ पहुँचेगा तो ये slot को move होके यहाँ आना होगा. Then the slot will have to move, क्योंकि ये point A तो यहाँ आ चुका होगा ना. This point A must have moved to this A star position. So as it moves to A star position, the slotted link must have come here. The slotted link must have come here. Okay? The slotted link must have come here. अब slotted link, ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो. अब इसको वापस लेके आओ. तो ये slotted link की इनिशियल पोजीशन हो गई. let's say this is the initial position of slotted link. Let's say any one position you can take as initial position. Let's say this is the initial position of the slotted link, which is link number 1. Then यहां से जब आप थीटा रोटेट करते हो, मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप बता दो मुझे slotted link का डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है. As you rotate theta, then what is the displacement of slotted link with respect to initial position? As you rotate the crank by theta, as crank rotates by theta, the displacement of slotted link is going to be what? The displacement of
slotted link, my dear friends, is x. As crank rotates by theta amount, the displacement of the slotted link is x. Okay? And you can very clearly write x is equal to r sine theta. You can very clearly write x is equal to r sine theta. Guys, अगर आप velocity की बात करोगे, velocity of that slotted link is nothing but dx by dt. Velocity of that slotted link is nothing but dx by dt, and that will become, क्योंकि r तो constant है, r constant है तो वो बन जाएगा r cos theta d theta by dt, r cos theta d theta by dt, and d theta by dt is nothing but the angular velocity. D theta by dt is nothing but the angular displacement divided by time, which is angular velocity. So I get velocity of the slotted link as r omega cos theta. And now what will be the acceleration of the slotted link? Acceleration of the slotted link will be the velocity ka derivative with respect to time. The derivative of velocity with respect to time, my dear friends, r is a constant thing, and एक बार आप करोगे cos theta को ऐसे ही रखा, ओमेगा को डिफरेंशिएट किया, एक बार आप cos theta को ऐसे ही रखोगे, ओमेगा को डिफरेंशिएट करोगे. Once you can keep omega like that, and you can differentiate cos theta. ये ध्यान रखना, theta is a variable, okay? Theta is a variable with time. So that will become minus sin theta, and theta का फिर से होगा d theta by dt. Suppose crank is rotating with constant angular velocity. Let crank rotates with constant angular velocity. Let crank rotates with constant angular velocity. Then obviously the angular acceleration of the crank is going to be 0. The angular acceleration of the crank is going to be 0. And if the angular acceleration of the crank is 0, I get minus r omega square sine theta. I get minus r omega square sine theta. R sine theta तो x है नहीं. I get minus r omega square sine theta. But मेरे प्यारे दोस्तों, r sine theta is nothing but the position itself. R sine theta is nothing but the position itself. Acceleration is proportional to the displacement. And when acceleration is proportional to the negative of the displacement, motion is known by the name simple harmonic motion. When acceleration is proportional to the negative of the displacement, motion is known by the name simple harmonic motion. जानते हो? बहुत अच्छी बात है. नहीं जानते? आज से जान लो. You know it? Very good. Proud of you. You don't know it? Know it from today. आपको अगर 4 मैकेनिज्म्स के नाम दे दिए जाएं और आपको बोला जाए कि किस में SHM मिलेगा, तो it is going to be the Scotch Yolk mechanism that is going to produce a simple harmonic motion of link number 1. Link number 1, this is link number 2, this is link number 3, this is link number 4. This is link number 4. ठीक है? So guys, we have something like this. यहाँ पर SHM मिलेगा हमें F is equal to minus omega square x. लेकिन ये ध्यान रखना, एक और caution है, SHM तभी मिलेगा when crank is rotating with constant angular velocity. You'll get SHM only when crank is rotating with constant angular velocity. If the crank is rotating with constant angular velocity, then you'll get SHM. यार मुझ में तो अब ताकत नहीं बची है, एक इन्वर्जन बाकी है और उसमें लगेगा टाइम, क्योंकि समझना उसको थोड़ा टिपिकल है. Now I know the reason why simple harmonic motion, just Marut sir thinks
क्या ही तो बात है। हाँ जी, हाँ तो अब एक इन्वर्जन इसका और बाकी। हंग्री बहुत ज़्यादा, मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और यू नो हमें भी भूख लगी है। Don't skip breakfast. Yes, yes, I usually don't skip breakfast, but I'm involved in something serious very badly, and that's why days are going very. Chalo, people. See you tomorrow with one more inversion, and we are going to start tomorrow the velocity analysis. कल हम velocity analysis start करने वाले हैं, which is the second chapter. See you guys tomorrow. Thank you so very much. सर आप स्ट्रेस मत लिया करो, क्या ही तो बात है। Excited for Tom's classes. Good. नहीं संघर्ष, nothing is serious. I mean, you'll know, don't worry. बहुत जल्दी आप लोगों को पता चलेगा।